Hello friends, today we will discuss about loops in Java. Okay, imagine a situation where you have to print all the even numbers between 1 to 100. Now what you have to do? You have to check all the numbers between 1 to 100 whether these are divisible by 2 and giving you remainder 0, then it will be even number. Okay, but that task will become difficult for you because you have to execute all the steps for 1 to 100 numbers, so it will take a lot of time and efforts for you. Now what you have to do, you can do this task with the help of loops. Okay, so now there are three type of loops: for loop, while loop, and your do while loop. First, for loop. The for loop statement creates iteration over a collection of values. These values can be of different types. Moreover, it is an entry control loop, since one can't enter the loop until the condition evaluates as true. ये क्या करता है लूप? for loop, it create iteration over a collection of values. रिपीट करता है अपने टास्क को, और ये है एक एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि आप तब तक एंटर नहीं कर सकते लूप में जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट नहीं होती. कैसे? आपने ये सिंटेक्स लिखा: फॉर इनिशियलाइजेशन, मिडल में टर्मिनेशन कंडीशन, एंड थर्ड इज़ योर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप, and within the curly braces you have set of statements to be executed repeatedly. So what is the working of this loop? Firstly, initialization step. It is the starting point of loop. यहाँ आप starting point देंगे, जैसे i is equal to 1. ओके, इनिशियल वैल्यू, ये एक आपका एंट्री पॉइंट होगा. अगर ये ट्रू है, i लेस देन इक्वल टू 10 है ये, तो आपकी आगे फर्दर स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे. तो सेकेंड, टर्मिनेशन कंडीशन एक्ट एज द एग्जिटिंग कंडीशन इन अ लूप. द कंडीशन ऑलवेज इवैल्यूएट टू अ बूलियन वैल्यू. या ये आपकी कंडीशन फॉल्स होगी या ट्रू होगी. आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका एग्जीक्यूट होगा. हेंस द लूप रन टिल द टाइम द कंडीशन इज ट्रू. मोरओवर द फ्लो एग्जिट फ्रॉम द लूप एज सून एज द कंडीशन टर्न्स फॉल्स. जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप एग्जिट हो जाएंगे लूप में से. अगर आपका आई ग्रेटर देन 10 हो गया, 11 हो गया, तो आप बाहर आ जाएंगे लूप से. द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन अप्लाई टू अ प्रोग्रेसिवली एग्जीक्यूट द लूप. हैंस इट कैन प्रोसीड ऑन टू इट्स नेक्स्ट आइट्रेशन. नेक्स्ट आइट्रेशन पे आप या इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे. आई इक्वल टू 1 से आप आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा, 2 वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आपने इंक्रीमेंट कर दिया. And the beginning and ending curly braces indicate the statements that will get executed. Okay, now this is the flow chart. Firstly, initialization of the loop. Now next you will check the condition whether it is true or false. If it is true, then execute the steps. Okay, and next update the loop. iteration आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप होगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो टर्मिनेट हो जाएंगे आप लूप से. नेक्स्ट ये आपका प्रोग्राम है, आपने i1 लिया, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है 0 0 मॉड्यूलस 2 करके, तो आपका 1 प्रिंट नहीं होगा. नेक्स्ट ये फर्दर इंक्रीमेंट करेगा i इज इक्वल टू आई प्लस 1. अब आपकी i की वैल्यू होगी 2, ये फिर चेक होगा. अब ये रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स इट्स अ इवन नंबर, तो आपका आउटपुट में देन 2 विल गेट प्रिंट. नाउ नेक्स्ट इट विल चेक फॉर 3, then it will check for 4, it will check for 5, it will check for 6 up to 10, and when condition will become false up to number 11, then it will exit from the for loop. Okay, these are all the steps here. The value 5 is equal to 1, it is less than equal 10, hence we enter the loop. Okay, now second, the value 5 equal to 2, it's less than equal to 10,
it is 2 modulus 2 is equal to 0 to get printed, and the loop goes until it reaches I11. Now the output you get is 2 4 6 8 10. Okay, this is the working of for loop. Now next is your while loop. The while is another iteration statement to iterate over different types. It accepts a condition and evaluates it to a boolean value. Boolean value means it evaluates it to true or false. If the value is true, the statement under the loop gets executed as the control jump out of the loop. Is also an entry control loop. Is also like for loop. For loop is also entry control, and it's also entry control loop. Now while loop work the same as for loop: initialization, termination, and increment, decrement. Is the flowchart. Initialization condition, if the condition is true, execute statement, otherwise terminate the loop. Okay, and it's the syntax. Firstly, you initialize, then check the condition, and if under this while loop, execute set of statements, increment step, and end the curly braces. Now next, this is the program. Print even number ranging from 1 to 100, 1 to 10. I is equal to 1 while I less than equal to 10. If I modulus 2 equal to 0, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है, आई प्रिंट हो जाए. नेक्स्ट स्टेप आपका इंक्रीमेंट हो जाए, फिर 3 के लिए चेक हो, 4 के लिए चेक हो, अप टू 10 के लिए चेक हो. इस तरह से ये रेपिटेशन होती रहेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो एग्जिट हो जाएगा वाइल लूप से आपका. नाउ ये सभी स्टेप्स हैं आपके. ओके, और इसमें आपकी आउटपुट आ गई 2 4 एंड 6. नेक्स्ट है आपका डू वाइल लूप. डू वाइल फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स अंडर डू, देन चेक द कंडीशन अंडर वाइल. ये वन टाइम तो एग्जीक्यूट कर ही देता है स्टेटमेंट्स को, तो इसलिए इस लूप का एक और नाम है एग्जिट कंट्रोल लूप. Hence, the statement under do will at least be executed once, even if the condition evaluates to false. अगर आपकी first time condition false भी है तो भी ये one time print करेगा. This is the reason it is called an exit control loop. It is one of the major difference between while and do while. While is your entry control loop, and do while is your exit control loop. Syntax is this: do curly braces open, statement to be iterated, curly braces close, and while condition. And this is the flow chart. Initialization, execute statement under the loop, update the loop, then condition is checked whether it's true, then execute statement, and then update, and if it's false, terminate the loop. So first print the value 1 and increment the value of I by 1. फर्स्टली आपकी प्रिंट हो गई वैल्यू 1. ओके, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट हुआ, देन चेक द कंडीशन. हैंस इवन इफ आई इज नॉट डिविजिबल बाय 2, स्टिल इट गॉट प्रिंटेड एज एन आउटपुट. हियर यू कैन सी 1 is printed here. Second, the value of I is equal to 2, then remainder 2 modulus 2 is equal to 0 to get printed. Now the value of I get incremented by 1. Now it will check for I 3 for value 3, and it does not satisfy the condition. Then it's not equal to 0, hence the loop terminates. So in output you can see 1 and 2 get printed. So these are the workings of for while and do while loop. Now we will meet in our next session with next topic. So goodbye, have a nice day.